Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radha Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Gaura Pimanandi Jayam Vishupad Paramahamsa Pri Vraj Gachaja Stotra Satya Sri Srimad Divine Grace Chirabai Saranaravind Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki ISKCON DVT Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada ki Namacharya Sri Haridas Thakur ki Samavata Bhakti Vrinda ki Harinam Sankirtan ki Granthara Srimad Bhagavatam ki Jaini Thai Gaura Pimanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, to the assembled devotees. All glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Asana. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Taksurambiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Syam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Rita Sri Visakanditam Sya Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tatho Jayamudiraye. Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Praya Sabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee,
All that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamhitam Uttamasloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. The Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literature, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Sri Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Mukham karoti vacharam pangom langayate girim yat kripa tamaham bandhe Sri Gurum Dinataranam yat kripa tamaham bandhe Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. We continue reading from first canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 3. And chapter 3 is entitled, Krishna is the source of all incarnations. And today we are reading text number 3, huh? Yes, text number 3. Yasya avyaya samsthanai kalpito loka vistara tad vai bhagavato rupam vishuddham sattvam urjitam yasya vayava samsthanai kalpito loka vistara tad vai bhagavato rupam vishuddham sattvam. And Grace Bhakti Swami Sri. It is believed that all the universal planetary systems are situated on the extensive body of the Purusha, but he has nothing to do with the created material ingredients.
ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो जो पुरुष है उसके पुरुष से संबंध है, यहाँ पे भगवान के विस्तारित रूप से है। जो पुरुष है उसके उसमें स्थित है जो जो भी ब्रह्मांड का जो भी सृजन हुआ है, लेकिन उसके जो जो इंग्रेडिएंट, उसके जो जो जिन जिन वस्तुओं से वो बना है, वो ब्रह्मांड और वो जो जो जितने भी लोग हैं उसमें वो सब भौतिक हैं। His body is eternally in spiritual existence. Yeah. शरीर है वो Purport. The conception of the Virat Rupa or Vishvarupa of the Supreme Absolute Truth is especially meant for the neophyte who can hardly think of the transcendental form of the personality of Godhead. तो ये जो जो रूप है भगवान का, इसको विराट रूप या विश्व रूप कहते हैं। ये नियोफाइट मतलब कि नए जो कम आध्यात्मिक प्रगति वाले जो भक्त हैं, जो नए नए जुड़े हैं, उनके लिए होता है, क्योंकि वो भगवान की दिव्य दो रूप की जो जो भगवान का जो फॉर्म है उसको नहीं समझ सकते। To him, a form means something of this material world, and therefore an opposite conception of the extension of the Lord. उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंधित कोई वस्तु है। अतः प्रारंभ में श्री भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने हेतु परम की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। As stated above, the Lord extends his potency in the form of the Mahat-tattva, which includes all material ingredients. तो जैसा कि पहले बताया गया कि भगवान की शक्ति का विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने हेतु परम की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है कि भगवान महत-तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। The extension of power by the Lord and the Lord himself personally are one in one sense, but at the same time, the Mahat-tattva is different from the Lord. एक प्रकार से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं श्री भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महत-तत्व श्री भगवान से भिन्न भी है। And therefore, the potency of the Lord and the Lord simultaneously different and undifferent. फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान भी साथ भिन्न तथा भिन्न है। The conception of Virat Rupa, especially for the impersonalist, is thus non-different from the eternal form of the Lord. इस प्रकार विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए श्री भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। This eternal form of the Lord exists prior to the creation of the Mahat-tattva, and it is stressed here that the eternal form of the Lord is par excellence spiritual or transcendental to the modes of material nature. श्री भगवान का यह नित्य रूप महत-तत्व की दृष्टि से पूर्व में विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि श्री भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। The very same transcendental form of the Lord is manifested by his internal potency and the formation of his multifarious manifestations of incarnations is always of the same transcendental quality without any touch of the Mahat-tattva.
यही दिव्य रूप श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महत तत्व की का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। Yes. So the subject matter at hand is in regards to the Mahat-tattva and the Virat Purusha form of the Lord. तो आज का जो चर्चा का विषय है वो महत तत्व और विराट रूप जो है भगवान का उसके बारे में चर्चा की जाएगी। The Mahat-tattva is actually the energy of the Lord, what is called the Bahir Anga Shakti, external energy of the Lord. तो ये जो है ये बहिरंग शक्ति से संबंधित आज का विषय है। बहिरंग शक्ति जो भगवान की जो बहिरंग शक्ति है उसके बारे में। The Lord has three, there are three aspects or three tattvas that are describing the Lord. One is He is Param Tattva, one He is Shaktiman, and one He is Rasa Samudra. तो भगवान के जो तीन तत्व जो हैं विशेष करके पहला जो है वो परम तत्व है, दूसरे शक्तिमान है, तीसरे रास समुद्र है। Yeah, so this section here, this particular verse and purport, second tattva means he's the source of all energies, and in particular, this external energy, which is connected with this Mahat-tattva and this Vishwarup or Virat Rupa. तो आज का जो विषय है वो जो तीन तत्वों में जो दूसरा तत्व है शक्तिमान, उससे उस विषय से संबंधित है कि भगवान कैसे शक्तिमान होकर के जो बहिरंग शक्ति है उसके साथ कैसा आदान प्रदान करते हैं। Not such an easy subject matter to understand. Spiritual potency or the spiritual energy is not easy for us to understand because we are at present embodied. तो भगवान का जो आज का विषय तो आसान नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा विषय होता है भगवान का जो जो पूर्णतः आध्यात्मिक स्वरूप वाले जो विषय होते हैं वो भी समझने आसान नहीं होते। Even the material energy is not easy for us to understand because for the same reason, because we are embodied or limited. तो आज का जो विषय होगा वो भगवान भौतिक शक्तियों से कैसे काम करते हैं उसके ऊपर चर्चा होगी और ये भी समझने में आसान विषय नहीं होगा। So although that we speak of this external energy, material energy, because it is coming from Krishna, it is simultaneously, as Prabhupada explained in the purport, it is simultaneously the same and different from the Lord. तो जो बहिरंग मतलब ये जो भगवान की जो शक्तियां हैं वो भगवान से एक हैं और एक नहीं भी हैं। Means, just like the Lord, He is omnipotent, omniscient, omnipotent, omnipresent. He's full of unlimited, inconceivable energies. Similarly, His material energy displays some of that. वो सर्वविद्यमान है, हर जगह हर चीज के जानने वाले हैं, वो हर जगह हैं और ये वो है कि वो हर जगह कैसे हैं तो अपनी शक्तियों के द्वारा हैं जिससे कि आज का चर्चा का विषय। We know that the Lord is present in each and every atom. भगवान जो है एक अणु में एक एटम के अंदर भी है। Atom is described in the Bhagavatam as being, you cannot see an atom with the naked eye. तो अणु का मतलब एटम का मतलब कि इतना छोटा भौतिक पदार्थ जिसको कि देखा नहीं जा सकता। Our body is made up of hundreds, thousands, I think millions, maybe billions of atoms. हमारा शरीर जो है वो अरबों खरबों अणुओं से बना हुआ है। And just one atom
this was discovered by scientists. They were able, what is the atomic bomb? Atomic bomb is when you break one atom. हमारा शरीर खरबों एटम से बना हुआ है और एटम बम वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ है जिसको बनाते हैं कि एटम को तोड़ करके उसमें से ऊर्जा निकलती है. One atom, actually, one bomb can destroy can destroy thousands of lives and can destroy so much of property, etc. Yeah. एक बहुत विशाल रूप से बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है. So in other words, it means that the Lord, even within this external material energy, has invested so much of his own energy, power. इस एटम बम को उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भगवान ने इस संसार में भी एक एटम के अंदर भी कितनी सारी ऊर्जा को कितनी सारी शक्ति को उसमें जो है इन्वेस्ट करके रखा, उसको जो है उसमें रखा हुआ. So here it is describing how the Lord is the source. He is the one who creates this Mahat-tattva, this material energy, but he himself, although he enters into this material world, he always remains aloof, unaffected. तो वैसे तो भगवान ने हर जगह अपनी ऊर्जाओं का निवेश कर रखा है, लेकिन वो खुद भौतिक संसार से दूर रहते हैं. He remains unaffected in all of the different avatars or incarnations who appear in the material world. They are all transcendentally situated. तो भगवान भौतिक जो संसार है उसमें संलिप्त नहीं हो जाते हमारे जैसे. वो और उनके जितने दूसरे जो अवतार होते हैं वो भी इससे भौतिक संसार से अछूते, उसमें फंसते नहीं हमारे जैसे. Yeah, this Mahat-tattva, this material energy is, of course, nicely described in the Bhagavad Gita. That is Prakriti. Prakriti. भगवद गीता में इसी महत्त्व के विषय को प्रकृति कह करके संबोधित किया गया है. What is the main feature of Prakriti or quality of Prakriti? प्रकृति का क्या है, ये जो उसकी क्वालिटी क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं प्रकृति के? Prakriti is what is the nature of Prakriti? Motherly? Yes. Prakriti requires a Purusha to operate. Hmm? Prakriti requires a Purusha to operate. Yes. Prakriti is subordinate to Purusha. Prakriti cannot function without the presence of Purusha. प्रकृति का स्वभाव यह है कि उसको एक पुरुष लगता है काम करने के. Yeah. And Bhagavad Gita, of course, Krishna explains two types of Prakriti. भगवद गीता में दो प्रकार की प्रकृति के बारे का विवरण है. There's a question for Gurukula. What are the two types of Prakriti दो प्रकार की प्रकृति क्या है that Krishna describes in the Bhagavad Gita? भगवद गीता के अनुसार क्या है दो प्रकार की प्रकृति? भगवान की दो प्रकार की शक्ति है, बताओ. बाहर अंदर कैसे बोलो? लेकिन अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति. No. Well, specifically, that actually is correct. But looking for two, he speaks about Paraprakriti and Aparaprakriti. Nature, material elements. तो परा प्रकृति जो है वो भौतिक संसार से, Yeah, also known as Bahiranga Shakti. जिससे कि बहिरंग शक्ति. Yeah. So this Aparaprakriti cannot do anything without the presence of the Paraprakriti. तो ये अपरा प्रकृति कुछ नहीं कर सकती जब तक परा प्रकृति का के साथ उसका संयोग ना हो.
And the other quality or aspect of this prakriti actually means the gunas, the influence of the modes of material nature. प्रकृति जो है उसके अंदर ये जो तीन गुण होते हैं वो काम करते हैं. Yeah. So because Krishna and his incarnations, when they come in the material world, they always remain completely transcendental, so they are not affected by the gunas. Yeah. भगवान जब आते हैं भौतिक संसार में तो वो तीन गुणों से नहीं बनते, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो गुण काम कर रहे होते हैं भगवान उन तीन गुणों से नहीं बनते. Our problem is that we are influenced or affected by the material modes of nature. हमारी समस्या ये है कि हम लोग प्रकृति के तीन गुणों से बंध जाते हैं. So, fortunately, if we follow in the footsteps of the Lord, that means if we fully become sheltered by His internal energy, then we also will no longer be influenced by the modes of material nature. और अगर हम जो हैं भगवान की अंतरंग शक्ति के साथ अगर हमारा समन्वय हो जाता है तो हम भी गुणों से नहीं बनते. Yeah. And that is, of course, nicely explained in the Bhagavad Gita. The only process or system by which we can no longer be influenced by the modes of material nature is by taking to the process of devotional service. तो भगवद गीता के अनुसार अगर हमें भगवान की बहिरंग शक्ति से उसके जो प्रकृति के गुण हैं उनसे बंधना नहीं है तो उसके लिए हमें भक्ति मार्ग का सहारा लेना होगा. Yes. And we can, just like now we are reading about the creation of this material world through the different Purusha avatar, Mahavishnu, Garbhodakshay Vishnu, Kshirodakshay Vishnu. तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो भौतिक प्रकृति का अपना सृजन कैसे करती है उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें कि महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु उनके क्या महत्व हैं उसको देखेंगे. We've been reading in the last few days how this is the manner in which this material creation comes about. तो हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ये भौतिक प्रकृति और इसका सृजन जो है वो कैसा होता है. Yes. दिनों से इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है. Otherwise, it is not possible to understand how this material world is created. तो फिर उसके बिना हम समझ नहीं पाएंगे कि भौतिक संसार की रचना होती कैसे. So that's why we are hearing from these Vedic literatures. This is actually today is the appearance of Srila Jiva Goswami. Abhirbhav Prithivyan. Srila Jiva Goswami, we should know, as was mentioned a little earlier, he is that personality, that individual amongst the six Goswamis who established especially what Srila Bhakti 10 basic realities or truths. Yeah. Today Jiva Goswami's appearance. Jiva Goswami established what later on his appearance appeared. तो आज जीव गोस्वामी का अपीयरेंस डे है. और जैसे जो हम संसार का सृजन कैसे हुआ वो समझने के लिए इन वैदिक ग्रंथों से और आचार्यों के माध्यम से समझते हैं. एक बहुत बड़े आचार्य हुए जीव गोस्वामी, जिनका कि आज आविर्भाव दिवस है. आविर्भाव दिवस का मतलब आज के दिन वो पैदा हुए थे, उनका बर्थडे है. तो और इनके ही ग्रंथों के आधार पे भक्ति विनोद ठाकुर ने 10 मूल तत्व नाम के ग्रंथ को लिखा है. तो 10 मूल तत्व जो हैं वो हमें तात्विक दृष्टिकोण से बताते हैं कि इन्हीं विषयों के बारे में बताते हैं जिनके ऊपर आज चर्चा हो रही है. Srila Jiva Goswami was the youngest of the Goswamis, but he became the greatest
philosopher recognized by all the Goswamis and recognized up to this day as being one of the most prominent or greatest philosopher. Yeah. तो वैसे तो जीव गोस्वामी जो थे आयु में सबसे बड़े नहीं थे बल्कि सबसे छोटे में से ही थे, लेकिन इसके बाद भी वो सबसे बड़े जो थे दार्शनिक बने बाकी सभी गोस्वामियों में से। तो ये उनकी फिर महानता थी कि वो काफी विद्वान थे और उन्होंने इस विषयों के ऊपर चर्चा करी है। And he is especially famous. I think a short list was read this morning, some of his writings. Especially he is famous for his Satsandarbha. तो जीव गोस्वामी जो है उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा जो तात्विक और रूप से काफी आसानी से और सरल भाषा में भगवान से संबंधित विषयों को समझाते हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ा उनका जो ग्रंथ माना जाता है वो है षट्संगर। I think in the, what is it? Acharya, Gurukul Acharya course that is being studied, Satsandarbha? Okay, yeah. Anyway, it is a very, very essential part of our Gaudiya Vaishnav teaching. Yeah. महाराज जी पूछ रहे थे कि क्या षट्संगर को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है जो गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग है, तो फिलहाल तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो उसको आगे चल के पढ़ाने के ऊपर हमारा विचार है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है गौड़ी वैष्णव। And he makes this, Srila Jiva Goswami especially emphasizes or explains that all knowledge that we want to acquire, either spiritual or material, must begin or must be connected with the Vedas, Vedic knowledge. तो जीव गोस्वामी इस बात को षट्संगर में लिखते हैं कि हम जो भी ज्ञान, हमारा जो भी सामान्य ज्ञान है दुनिया में जीने के लिए, रहने के लिए, उसको हमें किसी न किसी रूप से वेदों के तरफ उसको जो है उसका जो ओरिजिन है, जो उसका जहाँ से उद्भूत हुआ है, उसको उसका केंद्र बिंदु हमें वेदों को रख करके करना चाहिए। जो भी सामान्य ज्ञान है हमारी दुनिया में, जो हमारी समझ है। It means that the real scientists are those who thoroughly read and understand Vedic literatures, especially Srimad Bhagavatam. तो जो सही में जो असली दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, जो सही में बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको समझना चाहिए कि अपनी सामान्य जो जीवन की गतिविधियां हैं उसको कैसे वो शास्त्रों को केंद्र बिंदु में रख करके उसको कैसे करे, जिससे कि उसके जीवन में जो है एक शुद्धिकरण हो। और फिर जीव गोस्वामी ने उसको बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। Does anyone know how many books Srila Jiva Goswami has written? किसी को पता है जीव गोस्वामी ने कितने ग्रंथों का रचना करी है? 25. He wrote quite extensively. I think these are the first 25 prominent books. तो जीव गोस्वामी ने विस्तृत रूप से, बहुत बृहद रूप से बहुत सारी रचनाएं करी हैं। 25 उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। Yeah. Okay. Any comments or questions on this? Yes. Maharaj is written in this purport that for neophyte devotees, one should try to meditate on this Virat Rupa. So for us, we can try this out, like for us or another some new devotee who is getting connected, that they should try to meditate on Virat Rupa so that they can slowly increase their consciousness from material consciousness to spiritual consciousness. You ask, should we Try to meditate on Virat Rupa, or they should directly try to meditate on Radha. Krishna? तो प्रश्न है कि इस तात्पर्य में लिखा है कि
जो नए भक्त हैं उनको विराट रूप के ऊपर चिंतन करना चाहिए। तो बात है क्या हमारे ऊपर ये लागू होता है या हमें राधा कृष्ण के ऊपर चिंतन? That's a very good question, actually, that Prabhupada explains in different places. Our ultimate goal, of course, is to meditate on the original transcendental form of the Lord, Sri Radha and Krishna. तो वैसे तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि जीवन का जो हमारे परम लक्ष्य है वो राधा कृष्ण के ऊपर चिंतन करना है। However, it is not so easy to immediately be able to do that. तो लेकिन ये इतना आसान नहीं कि आप तुरंत ही इसको सीख जाएं, तुरंत ही इसको करने लगें। So this instruction is, of course, in the purport, Prabhupada is referring to impersonalists, but also it is relevant for those who are still not fully self-realized. तो वैसे तो इसमें लिखा है कि निर्विशेषवादियों के लिए है विराट रूप के शरीर पे चिंतन करना, लेकिन ये नए भक्तों के लिए भी अच्छा फलदायक साबित होगा। So, in other words, there is very much validity in in meditating upon and understanding and appreciating the creation of the Lord. By understanding, appreciating the creation, the more we appreciate the creation of the Lord, then the more we'll be able to appreciate the creator of that creation, the origin, the source. तो ये फलदायक कैसे होगा कि जब हम देखेंगे कि हमारे अगल बगल जो भी संसार की रचना है, जो भी हमारे, अगर हम उसको सोर्स, उसके स्रोत को जानेंगे और उसको हम उसके प्रति हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, जिसने उसको बनाया है उसके प्रति भी नैसर्गिक रूप से हमारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनता चला जाएगा, जो कि भगवान के प्रति होगा। Actually, there's a very interesting purport, I believe in the first canto of the Bhagavatam, where Parikshit Maharaj, in discussing with Shukadeva Goswami, is asking a question about the material creation, the cosmos. तो श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय में, पहले स्कंद में परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से ब्रह्मांड की जो है रचना कैसे हुई इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। So in that purport, Prabhupada explains that here we have Parikshit Maharaj. He knows that he will leave his body within 7 days. Why is he bothering to ask about the material creation? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस प्रश्न के विषय में, ये जो चर्चा हुई परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में, तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि परीक्षित तो हफ्ते भर के अंदर वो अपना देह त्याग करने वाले थे। One would think, if somebody knows he's going to leave their body, I just want to hear Krishna Katha, only Krishna Katha. तो फिर वो तो अपना शरीर देह त्याग करने वाले थे, तो लेकिन वो फिर भौतिक संसार के बारे में क्यों सुन रहे थे? उनको तो कृष्ण कथा सुनना चाहिए। So Prabhupada makes the point, this is also Krishna Katha. तो फिर प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ये भी कृष्ण कथा ही है। Because the Lord's creation is the Lord's creation. It is His energy. And this very important point Prabhupada is explaining, that even though Parikshit Maharaj knows that he will leave his body, he is also inquiring about how the Lord creates and how He organizes this whole material cosmic manifestation, simply to, of course, for our benefit and for Him to appreciate even more and more the Lord's inconceivable potencies. तो इसके बारे में ये अनुसंधान है कि वैसे तो भक्त को जो भौतिक संसार है, इसको अगर हम देखें और जिस तरीके से चलता है, जिस तरीके से ये अपने आप में जिस तरीके से ये चलता है, ये रचना भगवान, उसको अगर हम समझें तो फिर हमारा भगवान के प्रति
आकर्षण बढ़ता चला जाएगा और हमारा जो है जीवन का जो ध्येय है वो पूरा हो जाएगा. And just to bring this home, just to bring this on the land of Kutam, where we are living in a small forest, kind of. But the point I want to make is that the more we are conscious of Mother Nature, then we will not pollute Mother Nature. We will not allow all the kind of plastic papers that we see everywhere to be there. We will not allow garbage to accumulate unlimitedly, day in and day out. This is the kind of consciousness that we need to develop. Krishna's energy, Krishna's material energy, Krishna's material nature needs to be cared for because it is his. तो भगवान की जो ये जो प्रकृति है, जो हमारे जो जो नैसर्गिक प्रकृति जो हमारे अगल बगल है, अगर हम इसको इसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो फिर भगवान के प्रति भी भागवतम के दर्शन से अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें हमारे अगल बगल जो प्रकृति है, तो हमारा भगवान के प्रति भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण उसमें बनेगा. हम भगवान को उसमें देख सकेंगे और उसको देखने के बाद जो हमारे कुछ एक जो हमारे जो बर्ताव में जो होने दें, हम कहीं यहाँ पे प्लास्टिक का कचरा ना फेंकें और फिर क्योंकि उनको भगवान के साथ कैसा, क्योंकि हम भगवान की जो जो ऊर्जा है, भगवान की शक्ति है, उसका दुरुपयोग कर रहे होंगे जब हम इस प्रकार से कूड़ा कचरा फेंकेंगे, गंदगी करेंगे. We have the highest philosophy, but what is our ability to practically apply that philosophy? हमारे पास तो सबसे बड़ा दर्शन है, लेकिन हम उसको जीवन में उतार कैसे रहे हैं ये भी हमें देखना चाहिए. We every day chant in the morning one of the verses about mandira marjana. I mean, cleaning the temple, keeping the temple clean. Temple is not only in this building, the whole land. तो हम लोग सुबह जो है मंगल आरती में एक श्लोक है मंदिर मार्जन के बारे में बताता है कि मंदिर को कैसे साफ रखना चाहिए. तो मंदिर जो है सिर्फ ये इतना बड़ा कमरा ही एक मंदिर नहीं है, ये पूरी भगवान की सब प्रकृति जो भी अगल बगल है वो सब भी बड़े रूप विस्तारित रूप से देखा जाए तो वो भी मंदिर का ही हिस्सा है जिसे हमें साफ सुथरा. So to answer the question, yes, it is a way in which we can, we can glorify the Lord, we can appreciate the Lord by being conscious of His creation, of His material nature, and properly interacting and respecting and protecting. Yeah. तो जो प्रश्न था कि क्या हमें राधा कृष्ण के ऊपर ही चिंतन करना चाहिए या विराट स्वरूप के ऊपर भी करना चाहिए, तो उसके जवाब में महाराज जी ने इसका जो कंक्लूजन है वो दिया कि हाँ, हमें विराट रूप जो है उसके ऊपर प्रति हमें एक सतर्कता रखनी चाहिए कि भगवान की जो ऊर्जा है, भगवान की जो शक्ति है उसका दुरुपयोग ना हो. हम उसके भगवत दर्शन से हम जो प्रकृति हमारे अगल बगल है उसको हम देखें ताकि हम भगवान के प्रति भी एक आकर्षण विकसित कर सकें. Now the next question, Maharaj, is that if one is like thinking about this Virat Rupa and while meditating on Virat Rupa and in connection, like he is thinking that this is also the energy of Krishna, and if he leaves his body, then what is his gati or what is his, where does he Well, go? he merged into Virat Rupa. Virat to Golok Dham. विराट रूप के ऊपर स्मरण करते हुए देह त्याग करता है तो उसकी क्या गति होगी? If a person knows that it is Krishna, then he is properly situated. If that connection with Krishna is there. For most people don't know that connection with Krishna. But for devotees who know that connection, then they will go back to Krishna. Yeah. तो जो कोई भगवान ये देखेगा कि उसके जो विराट रूप को भगवान कृष्ण से जोड़ करके देखेगा तो उसकी तो सदगति होगी निश्चित रूप से.
और जैसी उसकी चेतना होगी उस प्रकार से उसका फल भी देगा. Because that's part of our philosophy. The Lord, He is non-different from His creation. When we connect, make that connection of the Lord's energy, external energy with Him, then we automatically, simultaneously also remember the Lord. तो जब हम तो यही हमारा सिद्धांत भी है गौड़े वैष्णव सिद्धांत की कि भगवान से कैसे हम जो भी चीज़ें हैं भगवान से कैसे उसको भगवान से संबंधित कैसे जो भी चीज़ें हैं भगवान से संबंधित हैं उस संबंध को हम कैसे देखते हैं तो हमारी जो है अच्छी गति हमें प्राप्त हो. Okay. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Sri Prabhupada ki Gaur Premanandi. Jai.